Okay, students, we will start from the meaning of a terrorism. Terrorism, the meaning. Types of terrorism. Start out. Terrorism in India is both an importation as well as an indigenously grown culture. What is the meaning of importation? Importation means it is well assisted from the foreign countries or from the neighboring countries. That is nothing but importation. And there are two types of terrorism that India is fighting, which is external terrorism and the internal or domestic terrorism. What is the meaning of internal terrorism? Internal terrorism means arising out from India, and external terrorism means the countries which are exporting terrorist activities to other countries, and also they are exhibiting their ideas for the development of intra-terrorism efforts. The types. Perhaps it is bureau. Okay, I am going through Jannat Parida. Listen, students. Meaning of external terrorism. External terrorism means the terrorist culture is imported to India from external sources. India is victim of this type of terrorism for no fault of her. External terrorism has the following dimensions. External terrorism, you must be knowing about different types of terrorist activities. World over कौन सब भल terrorist activities अच्छी reported terrorist activities. Organization कही परिवो कि पिले किछिटा terrorist organization का ना कही परिवो प्रियंका डोटा दे जो रहउची कौन अभिषेक आईएसआई गोटे एजेंसी पाकिस्तान रो किंतु टेररिस्ट होची कि अल कायदा तापरे हमर जदि चाहिबा जो गुडा के थिला पर्टिकुलरली इस्लामिक जिहादी ग्रुप्स एटा वेरी करूची गोटे कंट्री आ गोटे मुजाहिदीन भल सब जो गुडा की रेपुटेशन रही इंटरनेशनल लेवल रेपुटेशन तो नुए फॉर देम इट इज रेपुटेशन and for others it is nothing but notorious activities. तेणु इंटरनेशनल लेवल रे जे जो प्रोफेशन रे रहले सेही प्रोफेशन रे कोन करूचंदी ट्रेनिंग कैंप दउचंदी जेमते हमर भलो भलो कोचिंग रे हम एंट्रेंस ओरिएंटेड कोचिंग देला परे परे तांकु सेंड करूची कोन पई ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई सेही बळी वर्ल्ड ओवर रे पर्टिकुलरली किछटा कंट्री अछंदी जेमते हमें कहले आईएसआई कथा से माने सब कोन करचंदी ट्रेनिंग दउचंदी इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स को वेल ट्रेन्ड अनएम्प्लॉयड माने को ट्रेनिंग देले ट्रेनिंग देला परे कोन करचंदी एक्सपोज करचंदी फॉरेन कंट्री की से बाबद रे से माने कोन करचंदी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बा मैक्सिमम सपोर्ट पाउचंदी फाइनेंशियली. अच्छा जो एक्सटर्नल टेररिज्म हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस. फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. पाकिस्तान द्वारा जो कोन कला विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग कैंप कला एवं से ट्रेनिंग कैंप गुडा विश्वजित कोठी अछि कि हमर ट्रेनिंग कैंप गुडा सब पाकिस्तान रो बेसिकली पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सेटु कोन कला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दला पर एक्सपोर्ट कला फॉरेन कंट्री की सफर रे मेरे को माने पीओके माने बेनिफिट पाइला कि पाकिस्तान. सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म it implies that terrorist forces enter into the Indian soil from across the borders. The history of a cross border terrorism dates back to the period of accession of Kashmir to the Indian Union. Since then Pakistan tried her level best to create instability in Kashmir by sending terrorists from across the border. A number of terrorist training camps have been set up in Pakistan occupied Kashmir or POK to train the militants and provide them with high-tech arms and ammunition so that they can create terror and panic in Kashmir. The neighboring country carry on massive espionage and help the infiltration of the militants and provide excessive funding to the terrorist groups and outfits.
operating from its soil to create instability in India. जदि आम टेररिस्ट एक्टिविटीज कथा पिले कहबा जेबेठारु इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हैला एवं काश्मीर हैला इंडिया गोटे पार्ट एंड पार्सल किंतु ताकू रिकॉग्निशन दउनी किए पाकिस्तान पाकिस्तान रो नियर अबाउट 40% बर्तमान ऑक्युपाइड रहला पीओके कारण काश्मीर रो जो 60% से रहला इंडिया रे तेणु जो माने 40% बर्तमान पाकिस्तान रो अछंती से माने केबेले सैटिस्फाइड नथि पाकिस्तान रे रहिया पई आउ जो रहिले 60% पर्टिकुलरली जते हमें जम्मू काश्मीर ले लद्दाख क्रिएट कले मध्य से माने भी 100% सैटिस्फाइड नथि इंडिया रहिया पई किंतु अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बर्तमान जोर जबरदस्त काश्मीर लोक माने इंडिया सहित मर्ज करी रहिचंती से बड़ी सिचुएशन मध्य घटुची कोठी बालूचिस्तान रे लोक माने बाध्यबाधकतार सहित पाकिस्तान सहित रहिचंती जे पर्यंत पिले मन रख ये बाउंड्री इशू सॉल्व न होईची से पर्यंत टेररिस्ट एक्टिविटीज चालिबो दैट्स व्हाई वी कॉल Kashmir is the bone of a contention between India and Pakistan. Pakistan और इंडिया भीतर जदि किछि डिस्टर्बेंस घटुची दैट इज ओनली फॉर कश्मीर एवं जो ट्रेनिंग कैंप रही से ट्रेनिंग कैंप रो मुख्य उद्देश्य रहउची कोन टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विद इन द सॉइल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिलीजियस टेररिज्म. It is a cult of terrorism which holds religion on the top. It believes that religion is the strongest bond which binds the people with one another. By highlighting the bond of unity among the Muslims, the ISI of Pakistan is spreading hatred, ill will, and religious intoleration against Hindus. The followers of religious terrorism is always moved by religious imperatives and spreads hatred, violence, and communal feeling against the people of other religions. यदि वर्ल्ड ओवर आमे कहबा डिफरेंट रिलीजन भीतर मध्ये hatred रहिछि हमर हाईएस्ट रिलीजियस ग्रुप रहउचंदी के ना हिंदूज माने कोई इंटॉलरेंस रहउचंदी को माने मुस्लिम माने तेणु मुस्लिम माने पर्टिकुलरली जदि हमें कंसीडर करिबा सब इस्लामिक कंट्री नोंदी पर्टिकुलरली व्हेन वी कंसीडर अबाउट पाकिस्तान इज क्रिएटिंग सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हार्मफुल फॉर द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो दैट इज रिलीजियस टेररिज्म एवं जोटा को कहउचंदी इस्लामिक कंट्री जिहादी धर्म युद्ध स्वाधीनता पई से माने जो युद्ध करचंदी दैट इस्लामिक रूल अनुଯାयी कुरान अनुଯାयी जस्टिफाइड. Reactive terrorism is a sort of terrorism which has its link with the recently grown Islamic fundamentalism or jihadi movement. Osama bin Laden's Al-Qaeda organization has been patronizing the reactive terrorism or jihadi movement. The jihadis have no religion rather than they exploit religion. They are the mad zealots who sacrifice themselves in the name of Allah in the altar of terrorism. देखा पिले गोटे बहुत बड़ पर्टिकुलरली एटी गोटे देछि रिएक्टिव टेररिज्म जेते बेले वर्ल्ड ओवर में कंसीडर करू डिफरेंट टाइप है आई हसी आके क्या भाई एरो लाफिंग लिसन जेते बेले में कंसीडर करू रिएक्टिव टेररिज्म रे उस्मा बिन लादेन जे करथिला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इवन हमर पर्टिकुलरली वाशिंगटन रे अमेरिका रे जेते बेले कोन करथिला अटैक करथिला तार गोटे ही एम ऑब्जेक्ट थिला जिहादी मूवमेंट धर्म युद्ध जदि इस्लामिक रो गोटे टर्म अछि कुर्बानी से जेते हत्या करिवे सैक्रिफाइस करिवे फॉर द नेशन फॉर द कंट्री फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इट विल गिव सर्टेन टाइप ऑफ बेनेडिक्शन टुवर्ड्स अल्लाह का नारे सब किछि तंकर समर्पण रहिबो एवं जेते से कंट्री जय करिवे जेते टेररिस्ट अटैक करिवे जेते पॉपुलेशन को मारिवे on the basis of their own interest that would be considered as the bionic or certain type of a pious activity. Then cartographic terrorism. This is a kind of a terrorism which intends to inflict mental disturbances rather than doing physical assaults. This cult is especially developed by China. China is very often shows Indian territories as a part of China in its maps. After constant showing of Indian territories of Arunachal Pradesh as a part of her territory in map, China claims the same physically. Very recently, the Chinese troops have entered inside 90 kilometers of Indian boundary in Arunachal Pradesh and set up their bunkers there. After 20 years of repeated resentment of India, the Chinese troops went back, showing other countries' territory as one's own in a map is called cartographic terrorism. Listen, students. तुम्हें जानिथिबो चाइना रो आइडियोलॉजी हला कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी इंडिया रो आइडियोलॉजी हला डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी एशिया रे जदी दुईटा ब्रोड कंट्री अछंती गोटे होची चाइना और गोटे होची इंडिया
ताले पिले किंतु इंडिया रा और चाइना रा टेरी हमर विशेष करी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रही छि एबर सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया चाइना रिलेशनशिप पड़ी जाइछि अवश्य पड़ी जाइछि रिपीटेडली इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एगुड़ा से फॉरेन पॉलिसी रे आ परवर्ती चैप्टर हमें पढ़िबा फिर भी पिले देखो जदि हमें कंसीडर करबा इंडिया रो केतेटा रही स्टेट पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश टाको चाइना एबे भी सुधा क्लेम करूछि ता मैपिंग भितर एटा होछि मोर बोली इवन तुमे जानिथिबो हमर विशेष करी लोकल पास याउ जो रही पर्टिकुलरली सिक्किम ये केतेटा स्टेट ऊपर चाइना रे एबे भी सुधा हाईनेसली डिमांड अछि एवं जेतेबेले इंडिया चाइना वार लागितिला सेतेबेले 90 किलोमीटर बॉर्डर एरिया को मध्य कवर करछि कि ना चाइना तेनु चाइना रे गोटे प्रकार रही कोन कि पर्टिकुलरली स्लो पॉइजनिंग प्रिंसिपल से डायरेक्ट अटैक करनी पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भली किंतु इंडिया रो ट्रेड और रिलेशनशिप इंडिया रो नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप सब गुडा को से कोन करछि प्लान पकई कट ऑफ करूछि एंड दैट इज नोन एज कार्टोग्राफिक टेररिज्म अर्थात ग्राफिकली यदि मु वर्तमान कहबी तुमर कोनसी एरिया को आउ गोटे कोनसी लोक ऑक्युपाई करिनला तमे ता ऊपर पोजीशन रहिछो किंतु से ऑक्युपाई करनला मैपिंग रे किबा तम रेकॉर्ड पत्र रे एटा तुमको हैंडल करिवो साइकोलॉजिकली इट इज वन टाइप ऑफ इंप्रेशन वन टाइप ऑफ प्रेशर दैट्स नोन एज कार्टोग्राफिक टेररिज्म एटा गला एक्सटर्नल टेररिज्म रे तापर आसिला पिला इंटरनल और डोमेस्टिक टेररिज्म इंडिया भितर मध्य किछि किछि पिले रहिचंदी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देखो इंटरनल टेररिज्म as the name suggests is the terrorist violence witnessed by India from her domestic fronts. In domestic front, India has been fighting with terrorism since 1960s. Internal terrorism has the following dimensions. First is insurgency, second is separatist terrorism, third is Maoist insurgency. Please try to understand what is the meaning of insurgency. It is particularly found in case of northeast provinces. Ever since 1956, India has been fighting with the insurgency problem in the northeast. Insurgency movement began in Nagaland as Naga tribes claimed a separate state of their own. प्रत्येक ट्राइबल ग्रुप इंडिया रे कोन कले से कहले आमे गोटे गोटे प्रकार कोन करिबु ना स्टेट हुड क्रिएट करिबु सेपरेट स्टेट क्रिएट करिबु नागालैंड कला नागा ट्राइब क्लेम as a separate state of their own later on its spread to states like Manipur मिजोरम त्रिपुरा आसाम मेघालय अच्छा ये गुडा को देर मध्ये आमे जदि देखिबा प्रत्येक जगह रे स्प्रेड आउट करूची वर्तमान भी चली छि बिले मणिपुर रे इशू सेपरेट केमिति आमे करिबो प्रोविंस सेपरेट आमे केमिति स्टेट हुड क्रिएट करिबो बोली त्रिपुरा आसाम मेघालय एक्सेट्रा इंसर्जेंसी हैज टू डायमेंशंस गोटे डायमेंशन होची एथनिक डायमेंशन आ गोटे होची नेशनलिस्टिक डायमेंशन एथनिक डायमेंशन कोन जी जो एरिया रे रहिला पर्टिकुलरली जेम हम रिजनलिज्म पढुतिले से एरिया को बेस करी जेतेबेले डिवीजन कथा चाहिबो तणु एथनिक डायमेंशन गोटे हैला आ गोटे हैला नेशनलिस्टिक डायमंड जी जो कंट्री रहू जे जो स्टेट रहू प्रत्येक स्टेट चाहिले आमे जदी इंडिया पाखुर सेपरेट हे गलु ताल आमे जो स्टेट हुड क्रिएट करिबु एटा आसीबा हमर डोमिनेंसी हमर रहिबो कोन की गोटे प्रकार रेपुटेशन आमे इंडिया भीतर रही डेवलपमेंट करूचे हम डेवलपमेंट रो शेयर नउची के ना इंडियन गवर्नमेंट किंतु आमे जदी स्टेट हुड रे समस्त डेवलपमेंट करिबा ऑटोमेटिक हम स्टेट रो रेपुटेशन आसीबो एथनिक इंसर्जेंसी देखिबा ethnic insurgency is basically related with the identity of a group and its culture when the group of people having common physical features such as hair color skin complexion school develop a bond of unity is called ethnic unity पहिले तुमे देखुथिबो हमर आसाम रो लोक माने ताकर फेशियल अपीयरेंस गोटे प्रकार मणिपुर सिक्किम एमानकर गोटे गोटे प्रकार रहउची फिजिकल अपीयरेंस तो फिजिकल बा फेशियल अपीयरेंस को बेसिकली देखो हमें कोन गोटे प्रकार ताकर हेयर कलर स्किन कॉम्प्लेक्शन और स्कूल ये जो विशेष करी तांकर जो हेडशिप रो मुंडटा जो रहउची जो बड़ी प्रकार स्कूल माने कपाळटा रहिबो से एको बेस करी कोन करा होची गोटे प्रकार हमें कोन करछु डेवलप ए बॉन्ड ऑफ यूनिटी इट इज कॉल्ड एथनिक यूनिटी when these people feel that their identity as an ethnic group is at danger तांकर आइडेंटिटी जेतेबेले अलगा लोक माने तांको हैटेड करूचंदी घृणा करूचंदी सेतेबेले से कोन करंती दे रिसोर्ट टू वायलेंस एंड टेररिज्म गोटे प्रकार लोकन को आमे कोन करबा अंडरमाइन करबा अंडर एस्टिमेट करबा पर्टिकुलरली आमे जेतेबेले रेसिज्म हिसाब रे कहिबा सेतेबेले से लोक माने डिमांड करंती आमे आ नेशनलिस्टिक स्पिरिट रे रहिबुनु किबा टोटली कोनसी यूनियन सहित रहिबुनी आमे सेपरेटली गोटे स्टेट हुड क्रिएट करिबु इट इज कॉल्ड एथनिक इंसर्जेंसी दिस टाइप ऑफ इंसर्जेंसी इज विटनेस्ड इन नागालैंड मणिपुर मिजोरम एंड मेघालय ये लोक मानकर एथनिसिटी की बेस करी एथनिकल कल्चर को बेस करी
फिजिकल अपीयरेंस को बेस करी जेतबे अलग लोक माने तांको अंडरमाइन करबा को चेष्टा करले सेतबे से चाहिले आमे टोटली यूनियन इंडियन यूनियन से रहिबुनी आमे गोटे सेपरेट स्टेटहुड बा डोमिनेंस क्रिएट करिवु nationalistic insurgency these dimensions of insurgency rises or springs from the development of a nationalist sentiment among the people this type of insurgency is witnessed in Assam and Tripura a large number of Muslim immigrants from Bangladesh have flown into Assam and Tripura and settled down there. The government failed to stop such a large-scale immigration and also failed miserably to fulfill the demands of economic benefits for the local people. This caused the arousal of a nationalist sentiment and led to the birth of a nationalist terrorism or insurgency. देखो पिले आसाम और त्रिपुरा आसाम रो जानिथिबो पिले हाई यील्डिंग होची टी प्लांटेशन आसाम रो सोर्स ऑफ इनकम भलो देन दैट ऑफ ओडिशा और बिहार किंतु देखा जाउची बांग्लादेश रे जो माने सब थिले रिफ्यूजी माने इमाइग्रेंट थिले से माने जेतबे आसाम को पळे आसिले आसाम रे री एस्टैब्लिशमेंट हे गेले वर्तमान आसाम रो जो लोक माने जो बेनिफिट पाते से माने से बेनिफिट गुडा पाइले तेनु करी लोक माने आसामीज माने चाहिले आम राज्य रो लोक माने जो बेनिफिट पाइबे अलगा राज्य रो बा इंसर्जेंट्स ग्रुप कोन पई पाइ परिबे से मान को भीतर गोटा इल फीलिंग आसिला जोटा कोन कले ना से माने रेज देयर स्लोगन रेज देयर सेंटिमेंट अगेंस्ट द immigrants and that is known as nationalist insurgency. Then students, separatist terrorism, it is a kind of a terrorism which wants secession from the Indian Union. The cult of a separate terrorism has grown over the years in Punjab from 1978 to 1994 and now in Kashmir. The separatist groups carried out organized violence in the state as a part of their calculative move of secession. Then the intensity of their attack varied from ordinary bomb blast to that of a suicide bombing and even hijacking of a plane and blowing it up. This student house is separatist terrorism. तुमे जानि दिबो particularly हमरो जे के रहउचंती फर्स्ट लेडीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जदियो तांकर डेथ हेची 1984 रो द रीजन इज नथिंग बट दिस वन सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ग्रुप जेतबे पंजाब रो टेररिस्ट माने चाहिले से गोटे करिबो खालिस्तान एवं खालिस्तान करिबार तांकर मुख्य उद्देश्य पंजाब होची गोटे डेवलप्ड स्टेट डेवलप्ड प्रोविंस ऑफ इंडिया पंजाब चाइला मु जदी इंडिया पाखरु सेपरेट हे जिबी 30 वर्ष भीतर मु भी इंडिया को टपी जिबी त मु इंडिया सहित काई मर्ज करि रहिबी किंतु पिले आमे देखिबा जदी नेशनलिस्टिक पोटेंट रे पंजाब केवल नुहे जम्मू काश्मीर अलगा स्टेट मध्ये बेले बेले डिमांड करूचंदी फॉर स्टेट ऑटोनॉमी एज वेल एज फॉर सेपरेट स्टेटहुड सो दिस इज नोन एज सेपरेटिस्ट टेररिज्म एवं सेति पई से माने कोन करंती दे रिसोर्ट टू बम ब्लास्ट विभिन्न प्रकार टेक्निक यूज करा जाउची वायलेंस एक्टिविटीज रे तनो बम ब्लास्ट एंड टू दैट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग एंड हाईजैकिंग ऑफ अ प्लेन्स एंड ब्लोइंग इट अप प्लेन को हाईजैकिंग को जगह को बाहर जा को नेबे एवं ता बदल डिमांड करिवे से माने कोन ना जो माने सब नोटोरियस टेररिस्ट अछंती ताकू जेल रू रिलीज करिया अपन दीज आर द प्रोसीड्यूर्स ऑफ हाईजैकिंग प्लेन्स देन माओइस्ट इंसर्जेंसी The biggest channel of to Indian security concern in domestic sphere is the Maoist insurgency, more popular known as Maoism. The Maoist attack has been on the rise constantly in this decade. The range of their terrorist activities varies from bomb blast, murder, abduction, destruction of public property and means of communication to that of high-profile incidents like ambush with the police, attack on jails, looting of weapons, and derailment of trains causing heavy casualties. They believe in guerrilla warfare in order to increase the number of fighting soldiers. They resort to the practice of both persuasion and forcible abduction. देखो Maoist insurgency, Maoism. आसाम रो जदि हमें कहि ऑलरेडी इंडिया रो बॉर्डर स्टेट माने वर्तमान मोटिवेटेड होउचंती सब माओइस्टिक प्रिंसिपल द्वारा माओइज्म कोटिकर प्रिंसिपल चाइना रो प्रिंसिपल जो माओइस्ट अछंती बेसिकली हमें कहउचे माओवादी से माने विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग्स विभिन्न प्रकार परसुएशन विभिन्न प्रकार हेल्प पहिले कोड ना चाइना रू आ तांकर गोटिए मुख्य उद्देश्य हैला कोन ना से माने पर्टिकुलरली चाहूचंती गोटे इंसर्जेंसी ऑर्डर क्रिएट करिवे एवं तांकर डिमांड फुलफिलमेंट तो हबो नाही किंतु एटा गोटे फॉरेन कंट्री पर्टिकुलरली चाइना रो इन्फ्लुएंस रे से माने इंडिया रे डिस्टर्बेंस करूचंती एवं तांकर विभिन्न प्रकार टेक्निक यूज करूचंती से टेक्निक गुडा कोन कोन रहउची पर्टिकुलरली बम ब्लास्ट मर्डर abduction destruction of public property and means of communication so that high profile incidents like ambush with police से तांकर गंडगोल रहउची अटैक ऑन जेल जेल ऊपर अटैक करूचंती
आउ कौन करछन्ते ना लुटिंग ऑफ वेपन गुडा मध्ये चोरी करके नौचन्ते विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग कैंप किबा जेतले पुलिस ऊपर अटैक कले सेतबेले कोन करछन्ते ऑल टुगेदर जेते आर्म्स आउ अम्युनिशन अछि से गुडा सब कोन करछन्ते दे आर टेकिंग अवे फॉर देयर पर्सनल रिसोर्स रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म प्रकृतर टेररिज्म ग्रोथ हबार कारण कोन द रीजन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेररिज्म इज ऑलवेज बोथ एरिया स्पेसिफिक एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक that is it differs from place to place and from region to region. In Punjab, terrorism was based on Sikh religious fundamentalism, but in Assam it was based on Assamese nationalism. In Northeast, terrorism is the natural outcome of identity crisis. However, in Jammu and Kashmir, the nature of terrorism is somewhat intricate and a complicated one. The separate terrorism, reactive terrorism, and state-sponsored cross-border terrorism all played their negative role in the states. देखो पिले, यदि growth of terrorism टेररिस्ट मानकर प्रकृति में ग्रोथ होबार कारण कौन जदि आमे कहिबा प्रत्येक स्टेट रे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज गुडा क्रिएट होउचंदी तंकर एम आ ऑब्जेक्टिव वेरी करूची जदि आमे कंसीडर करिबा पंजाब कथा पंजाब रे तमे जानिथिबो पंजाब होउचंदी कोन माने सिखिज्म सिख रिलीजन से माने कोन कले रिलीजियस फंडामेंटलिज्म सब बेले रिलीजन को बेस करी तंका राज्य को शासन करिया पे से चाहिए रिलीजन को मैनिफेस्टो कले रिलीजन बेसिस रे तांको स्टेट रो डेवलपमेंट कथा चाहिए जदियो आमे कहबा सिख माने हिंदू स्टिल देन सिखिज्म होचे गोटे पर्टिकुलर रिलीजन गोटे हला रिलीजियस फंडामेंटल नेक्स्ट स्टूडेंट आमे जतबेले सेही कथा को मुडी कंसीडर करू टेररिस्ट एक्टिविटीज कथा पर्टिकुलरली जम्मू एंड काश्मीर बाबद रे कहले जम्मू काश्मीर लोक मानकर जो टेररिस्ट ग्रुप मानकर गोटे ही ऑब्जेक्टिव रहिछि कोन से माने जे परते इंडियन यूनियन सहित किबा पाकिस्तान यूनियन सहित मर्ज रही ये भली प्रकार कॉन्फ्लुएंस आसुथिबो जदि गोटे एभली समय आसीबो इवन हले 50 वर्ष 100 वर्ष कि 200 वर्ष परे पिले वर्ल्ड मैप रे गोटे प्रकार प्रोग्रामिंग आसी परिबा गोटे कंफर्मेशन जम्मू काश्मीर जोटा रही इंडिया रे पाकिस्तान रे जोटा अछि पीओके एवं जदि गोटे ताकू सेपरेट स्टेट करा हे गला मु भाबुची इंडिया रे किछि लॉस हबो पाकिस्तान रे किछि लॉस हबो एटा को कोन करा जिवो ना रिजोल्यूट करा हे परिबो एवं यति पई गोटे भयंकर वारफेयर मध्ये हेई पारे time will come the permitting issue would be ratified next गोटे पिला प्रे एक्टिविटीज आसुची हमर टेररिस्ट रे पर्टिकुलर आसाम रे लोक मानकर पिले प्रकृति रे आइडियोलॉजी रहउची कोन सन ऑफ द सॉइल प्रिंसिपल आसाम रे जति कि टी प्लांटेशन थारो आरंभ करी तांकर इंडस्ट्रियल सेटअप रहिला तांकर उद्देश्य हमर राज्य रो पिला माने सेही पोस्टिंग पान जदि आमे कोन कले ताकू गोटे नेशनल इश्यू कले एवं हम टोटली इंडिया रो कवरेज रे जते रहिले समस्त को सेठी नै रिक्रूटमेंट देले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कोन कले गैदरिंग कले से माने सेठी कोन करूचंती हाईजैकिंग करूचंती किडनैपिंग करूचंती एवं टेररिस्ट दरकार पड़ले ब्लास्टिंग करूचंती आसाम रे जानिथिबो गोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अछि उल्फा ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम से सब बेले चाहूची आमे गोटे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट करिवो आमे गोटे स्वाधीन फ्रंट करिवो जार मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो द डेवलपमेंट ऑफ आसामीज ओरिएंटेशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रत्येक स्टेट रे अछि द फॉलोइंग आर द वेरियस कॉजेस फॉर द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म इन इंडिया इंडिया रे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज रही छै त ग्रोथ होबार कारण कोन फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट its promise sometimes create terrorism in the northeast the certain organizations have already infused the seeds of alienation among the people they were socialized to believe that they are different from Indians this created an identity crisis among them the government of India have also failed in its role of educating the people of northeast that their ethnic identity will be protected despite all differences पिले आमे जानि छे इंडियन गवर्नमेंट इज देयर इंडियन गवर्नमेंट रो मेन ऑब्जेक्टिव होची कोन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 हम कहि चंदी किंतु हमर पर्सपेक्टिव से बळी रहउनी समस्त को वन करबा को हेले वन आइडियोलॉजी रहइबा दरकार वन वेशन रहइबा दरकार वन सेंट्रलाइजिंग फोर्स रहइबा दरकार किंतु बेले बेले हम गवर्नमेंट कोन करूची टिके पार्टी पॉलिटिक्स द्वारा बायस्ड हे जाउछ आमे बिलीव करछु डबल इंजन ऊपर जो स्टेट मानकर चलिला बीजेपी गवर्नमेंट वर्तमान सेंटर रे अछंती बीजेपी सेठी टिके भलो कोऑर्डिनेशन रहउची जो जगह रे बीजेपी सहित विशेष करी पर्टिकुलरली डबल इंजन रो गवर्नमेंट चलीनी एडमिनिस्ट्रेशन चलीनी सेठी टिके सेंटर आ स्टेट भीतर फैक्शन आसुची पर्टिकुलरली द इश्यू बर्तन हेची मु जोटा कहितली गोरथा बोधे मणिपुर कथा तण पिले जते बेले आमे चाहिबा इंडियन यूनियन सहित रहिबा को पड़िबो ताले जते गुडा यूनिट रहिले
केते गोटे प्रोविंस रहिले जेते गुडी स्टेट रहिले समस्ते कौन करिवे यूनिटरी फीचर रे रहिबे सेंट्रल गवर्नमेंट को मानिया को पड़िबो सेंट्रल गवर्नमेंट रो लॉ एंड ऑर्डर को बेस करी हमको परफॉर्मेंस करिया पई पड़िबो सो फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ टेररिज्म सेकंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेबरिंग स्टेट्स The foreign policy objective, the neighboring states also added problem to the cause of terrorism. The failure of Pakistan to grab Kashmir made her to follow a secret policy objective of creating instability and terror in Kashmir. So much the people will voluntarily offer their amalgamation with Pakistan. The separation of Bangladesh from Pakistan in 1971 had greatly hurt the latter. India's role in formation of Bangladesh could not be digested by Pakistan. So in order to teach India a lesson, Pakistan not only established friendly relations with Bangladesh, but also provoked her to link its territory to the militants of north-east states for the subversive activities against India. पिले जेतेबेले इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी तमे आ पर पढिबो बेस्ट चैप्टर होची फॉरेन पॉलिसी ओडिया रे हमें कहूची वैदेशिक नीति गोटे राष्ट्र प्रकृति रे डेवलपमेंट केतेबेले करे जेतेबेले तार फॉरेन पॉलिसी भलो थाए गोटे स्टूडेंट केतेबेले डेवलपमेंट करे जेतेबेले से अलगा स्टूडेंट मानकर भलो ता लेवल रो स्टूडेंट मानक सहित कोऑर्डिनेट बा कोऑपरेट करे तेनु इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो नेबरिंग कंट्री सहित रहिला विशेष कर पिले देखो 1971 रे बांग्लादेश क्रिएशन हला बांग्लादेश जेतेबेले क्रिएशन हला एटा गोटे प्रकार सेटबैक गोटे प्रकार फेल्युअर नथिला कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पई एटा गोटे फेल्युअर थिला फॉरेन पॉलिसी जेतेबेले पाकिस्तान देखिला इंडिया डायरेक्टली न हेले इनडायरेक्टली मोर कोन करछि किछि ना किछि लॉस करूछि कोन लॉस करूछि फर्स्ट लॉस हला बांग्लादेश क्रिएशन सेकंड लेस हला हमर पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर केवल एते कि नुहे पिले इंडिया पाकिस्तान रो जो जो बॉर्डर गुडा रहिला से बॉर्डर को हमें जो कहउछे एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल गुडा एबे भी सुधा एडजुडिकेटिंग नुहे प्रॉपर नुहे केतेबेले देखला को डिस्प्लेसमेंट करूछि इंडिया केतेबेले डिस्प्लेसमेंट करूछि के ना पाकिस्तान ता पई हमें जोटा फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप पढिबा ये पॉइंट गुडा ऑलरेडी मेंशन हेकि रहइबा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन रे नेक्स्ट स्टूडेंट्स wish of the localities for separate states sometimes the wish of the local people for separate independent state also caused problem of terrorism in case of Kashmir the local youth preferred an independent Kashmir but the government of India's role in making Kashmir part of the Indian Union have agitated them. They have resorted to violence to fulfill their wishes. The cross-border terrorism from Pakistan have raised their confidence as they felt that to terroristic attack only they could shut an independent state of Kashmir for Muslims only. Or terrorist attacks in the Kashmir Valley during the 1990s are directed against the Hindu politics or Hindu pundits. Listen, students. जो हिंदू पंडित माने पर्टिकुलरली रहिले जम्मू काश्मीर रे ताऊ हिंदू पंडित माने होचंदी के की सब विशेष करी राहुल गांधी का वंशधर जवाहरलाल नेहरू से माइग्रेटेड आस्तिले सेमानकर ऑब्जेक्टिव रहिछि हिंदू आइडियोलॉजी किंतु जम्मू काश्मीर रो मैक्सिमम लोक मानकर आइडियोलॉजी रहिला कोन इस्लाम रिलीजन तमे भाबी नियो वर्तमान में उदाहरण स्वरूप कहबी जेतेबेले पाकिस्तान ऑक्युपाइड रे रहिले को मानकर रिलेटिव पाकिस्तान रो ऑक्युपाइड रे रहिले रिलेटिव को मानकर जम्मू काश्मीर रो लोक मानकर सेमानक भितरे बहुत तांका रिलेटिव माने सेही जो होइला वार रे रहि गेले पीओके रे किछि रहि गेले कोठी काश्मीर रे सेमानकर एबे भी सुधा तांका भितरे प्रकार रिलेशनशिप रहिछि जो रिलेशनशिप रहिछि जो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग किंतु तांकर जो जीवास्य भी मध्यम पूरा फंक्शनल रे चलीछि इवन तमे भी जानिबो जदी मैक्सिमम जे हमर अछंती पर्टिकुलरली कपिल सिब्बल एते टैलेंटेड पर्सनालिटी से होचंदी लाहौर रो एलके आडवाणी से माने मध्य सब पाकिस्तान रो लोक जेतेबेले माइग्रेशन चलिला हिंदू मुस्लिम भितरे फाइट आसला 1947 रे से माने सब डिस्प्लेसमेंट हेइचंती जेतेबेले से माने अपन टोटली पळि आसले कि तांकर किछि बंधु बांधव एपट रहिले किछि बंधु बांधव सेपट रहिले जो माने बॉर्डर रे रहिले से माने किए दिस सहित संपर्क रखिबो के इस्लामाबाद सहित संपर्क रखिबो से कहले आम मानक भितरे गोटे टेरिटोरियल क्लोजनेस